सर मला नॅशनल गेम्सच्या आधी इंजुरी झालेली. तर मग तेव्हा असं वाटत होतं की चांगला थ्रो करू शकतो मी. आणि फिलिंग पण वगैरे सगळं चांगलं होतं. बाकी सगळं चांगलं झालं होतं. काय अडचण पण नव्हती असं की काय प्रेशर येतोय काही. ग्राउंडमध्ये मी करायचो 81 80 असं ॲव्हरेज करायचो. आणि बस आता हे कॉम्पिटिशनचं बस एकच डोक्यात ठेवलं की बेस्ट करायचं 80 नाही तर 81 असं ही रेंज ठेवलेली मी. सर असं तर कधी वाटलं नाही. आता स्टार्ट तर मी 2021 मध्ये केलता. इथं सनस सनस ग्राउंड पुणे बालेवाडी सॉरी पुणे सनस इथं. आणि मग तिथं मी 62 मीटर केलेला माझं पर्सनल बेस्ट 2021 मध्ये. आणि त्यानंतर मग मला ASI मध्ये बोलवलं सरांनी. काशीनाथ सर होते आधी त्यांनी. आणि मग तिथून पुढे स्टार्ट झालं सर. मग 70 केला 75 मग असं त्या रेंजमध्ये आलो. नाही सर प्रेशर तर कसं वाटलं नाही. मी ग्राउंडमध्ये असताना ॲव्हरेज थ्रो केला 81 82 मीटर ॲव्हरेज केला. आणि मी सारखं इंजुरीमध्ये होतो. अँकल इंजुरी बॅक इंजुरी. त्यामुळे मला माझं बेस्ट देता नाही आलं कधीच. आणि प्रेशर व्हायचं मला म्हणजे प्रेशर मला स्वतःहून प्रेशर यायचा हातात की चांगलं होईल का नाही. खराब झाली तर कॉम्पिटिशन हा प्रेशर असायचा. मला पहिला विचार आला माझा रिदम वगैरे सगळा चांगला होता. मी एका फ्लो मध्ये आलो स्टार्टिंग पासून तर एंड पर्यंत. आणि मग मला असं वाटलं लास्टला जेव्हा थ्रो केला ना की हा गेला थ्रो. तेव्हा मग म्हणजे असं एकदम असं बेस्ट थ्रो मला असं समजलं मला. मला सारखी इंजुरी आली. आता नॅशनल गेम्सच्या आधी मला असं वाटलेलं जानेवारीमध्ये जानेवारीमध्ये तेव्हा की असं वाटत होतं की गेमच सोडून द्यावा असं म्हणजे की असं असं झालेलं. एवढं इंजुरी येते सारखं इंजुरीमध्ये. आणि माझी बॉडी मी आता ग्राउंडमध्ये 84 मीटर थ्रो केलेला. त्याच्यानंतर पण मला इंजुरी आली अँकल इंजुरी. त्याच्यानंतर ते व्यवस्थित बरं होत नाहीये रिकव्हरी होत नाहीये व्यवस्थित. मग आता त्याच्यावर थोडंसं काम केलं आता नॅशनल गेम्स पासून तर इथपर्यंत. ट्रेनिंग पॅटर्न तोच आहे सर. आणि असं काय असं चेंजेस वगैरे काही केलं नाहीये. तोच आहे फक्त. आणि बाकी मी म्हणजे की थोडासा लोड कमी केला बॉडीवरचा. माझी जी बॉडी असं माझ्या बॉडीला जसं वाटेल तसं करतोय मी. मला असं वाटलं की आता अँकल पेन होतोय तर मग मी थोडंसं सोडतोय. आणि मग तेच थोडंसं ते करत 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 आलो. आणि आता बेस्ट झालंय माझा. माझे कोच कुलिंदर सिंग. तो आप शिवम को लाइक कहाँ तक देख पाते हो लाइक उसमें कितना कैपेबिलिटी और कितना दूर जा सकता है शिवम? इस साल का हमारा जो टारगेट है 86 तक होप है कि हम करेंगे कवर। अभी भी एवरेज थ्रो इसका ट्रेनिंग में 83 84 मतलब एवरी वीक में जा रहा है। अभी थोड़ा सा एंकल का इशू है, जब थोड़ा पेन हो जाता है तो दब जाती है, नहीं तो 83 84 का एवरेज थ्रो जा रहा है। लाइक आपने शिवम को पहली बार कहाँ देखा और लाइक उसमें आपको ऐसा क्या लगा कि इस बंदे में दम है लाइक ये आगे जाके कुछ कर सकता है? नहीं, मेरे से पहले इनको काशीनाथ कोसाब ने देखा। ये खेलो इंडिया गेम्स हुआ था यहीं पूना में, बालावाड़ी स्टेडियम में। वहाँ से हमने इसको टैलेंट स्पॉट किया था ASI के लिए। वहाँ से लेके फिर अभी तक का जो सफ़र है हमारे साथ ASI में ही है। और अभी आज का जो इसका पर्सनल बेस्ट हुआ है, तो आज की थ्रो ही इसकी बेस्ट है, लेकिन और अच्छा कर सकता है। लाइक अभी शिवम आने वाले समय में आप शिवम के लिए क्या क्या प्लान्स रखने वाले हैं लाइक कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और लाइक इंटरनेशनल का भी सोच रहे हैं या ऐसा? अभी स्टार्टिंग तो हमारा यही है कि कमिंग जो ओलंपिक्स आने वाला है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, उसको टारगेट लेके ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वही एम है हमारा कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आए देश के। कुछ अब्रॉड में ट्रेनिंग का प्लान वगैरह कुछ है ऐसा फ्यूचर? हाँ, हमने किया था अभी, बट थोड़ा सा टेक्निकली कुछ फॉल्ट होने के कारण हमें 2 महीने के लिए कंटिन्यू ना मिलने के कारण हमने उसको कैंसिल किया। अभी प्लान में है, जैसे अभी कैंप में, नेशनल कैंप में अगर मिल जाता है तो वहाँ नेशनल कैंप के थ्रू करेंगे, FI के थ्रू करेंगे। और नहीं है तो जो हमारा स्पॉन्सर है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू हम इसका वो ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं। लाइक लास्ट क्वेश्चन शिवम को आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे लाइक आप क्या कहना चाहते हो और लाइक
सलाह देना चाहते हो तो? सबसे बड़ा तो कंग्रेचुलेशन बोलूँगा, और इसी मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़े और देश के लिए अच्छी तरह के साथ मेडल लेके आए, यही हमारी दुआ है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, और आने वाले